that is management function and organization processes बेटा, ठीक है. किसी ने अगर go through करने की कोशिश की हो, आपको assignment मिला हो, तो उसमें आपका कोई query हो, तो you please do let me know. मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही brief में एक बार आपको बता देती हूँ what your subject talks about. This is the most easiest subject which you will get in MBA. Basics से शुरू होता है ये subject, which talks about the basic nitty-gritty of management and the organization. ठीक है. तो when you talk about management functions, बहुत commonly जैसे अपन abbreviations बनाते थे mathematics में sin theta cos theta याद करने के लिए, उसी तरह से management में ये जो jargons है which is called as PODC, that is planning, organizing, directing, controlling and staffing. आप कहीं मेंशन करना चाहते हैं तो यू कैन राइट डाउन. आपके जो ब्लॉक्स आपको रिसीव हुए हैं स्टडी मटेरियल के, दे आर टोटली बेस्ड ऑन दीज 4 to 5 abbreviations, that is planning, organizing, directing, controlling and staffing. That is, we start from planning, we go to organizing and then we go for directing, staffing and controlling the activities in the organization. अगर आपने किसी ने भी अपने ब्लॉक्स को खोल के देखने की कोशिश की हो, your 4 blocks talks about, first is talking about introduction to management functions, then it talks about planning, organizing, then it talks about directing, staffing and controlling, and then how all these things works in the organization. This much is clear to all of you. आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रही हूँ आप सबसे. तो जो 5 abbreviations आपको याद रखने हैं under this subject is P, O, D, S and C. P for planning, O for organizing, D for directing, S for staffing and C for controlling. किसी भी चीज को जब आप प्लान करते हैं, you need to assure that controlling is an essential fundamental. बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ. If you want to plan a small get together at your house, are everybody is with me? Can I have a yes from all of you? If not, Yes, ma'am. yes, ma'am. मैं आपसे कहती हूँ कि आपको एक छोटा सा घर पे get together plan करना है, तो what will be the activities? Anybody can raise hand and just share how they will do it. Anybody like to say? Okay, Ishu want to say? हाँ Ishu. No, ma'am. अच्छा, सोहिनी No, want to no, say? no Yes, question, ma'am. Okay, हाँ सोहिनी बताएं, अगर आपको मैं प्लान करने के लिए कहूँ एक छोटा सा get together, तो how you will start with? Ma'am, first we will start with the number of invitees. First we will sort out what is the occasion, how many people, means which it will be a big, small or medium type of occasion, then the number of invitees, then the food list, then the decoration, and after that, if it's a birthday party, then we will plan for return gifts and all. Then eventually after planning, we will start making arrangements like what is to be done first, and if we need to invite, it will be invitation card, or we will verbally invite over the phone, or the location, the food caterer, the decorations, and eventually everything after the planning, it will be the organizing rather, that how things will be done, who will do what are the job responsibilities. Okay, fine. Anybody wants to add? कोई और शेयर करना चाहेगा? Okay, aligned. जब भी आप प्लान की बात करते हैं तो आपके दिमाग में फ्यू क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, whom एंड व्हेन. आप समझ पे आ रहे हैं? क्या, कब, कहां, कैसे, किसके साथ और कितने एस्पेक्ट में. So generally when you talk about plan talks about answering the questions like what, how, where, when, how, with whom. आप समझ पा रहे हैं? Actually, when you try to talk about planning tries to answer all these questions. ठीक है? Any questions?
Any questions, students? आप समझ पा रहे हैं? No, ma'am, no Yes, ma'am. questions. Okay. No questions. आप मुझे अगर 1 मिनट देंगे तो मुझे एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा क्योंकि मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ स्क्रीन आप लोगों के साथ. Yes, ma'am, sure. Sure, ma'am, sure. Just a Yeah, second, sure, beta. ma'am. Just a Yes, ma'am, no problem. I'll take fraction of seconds to share the screen of your blocks which you want to study. ठीक है, आपके अगर हाथ में है आपके ब्लॉक्स तो आप एक बार मुझे फर्स्ट ब्लॉक में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो. अदरवाइज आई शेयर द एंटायर स्क्रीन ऑफ योर ब्लॉक्स जिसमें अपन एक एक ब्लॉक्स को स्वैप करेंगे और आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछेंगे. इज इट क्लियर? इज द मेथोडोलॉजी क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay. Yes, yes. अगर आपका कोई आपके हाथ में अगर स्टडी मटेरियल है तो काइंडली पुट मी क्वेश्चन टिल द टाइम आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ ऑल ऑफ यू. First block talks about management functions. What is management? How management is done? And what is role of managers? Are we able to understand? Yes. What is management? The second unit talks about how management got evolved. And the third unit talks about roles of managers. मैनेजमेंट में व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? जैसे मैंने कहा सिंपली व्हेन यू टॉक अबाउट द टर्म मैनेजमेंट यू टॉक अबाउट थिंग्स, हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू मैनेज, हाउ टू गेट द थिंग्स डन. आप प्लीज एक बार इन तीनों मॉड्यूल्स को देखिए एंड लेट मी नो हाउ यू विल और व्हाट क्वेश्चंस यू हैव. अगर असाइनमेंट में से कोई क्वेरी है तो प्लीज डू लेट मी नो. Hello. Yes, ma'am. Hello. Venkatesh, how can I help you dear? Ma'am, we did not. I mean, I did not writing started assignment, ma'am. Yet why? Because Okay. if any like this after hearing this counseling session, I'm able to plan for writing assignment. Okay, okay, no issues, Venkatesh, because when you go through now with your blocks, it becomes very easy for you to take up with the assignment because generally the questions are being put across from your blocks which are being issued to you. आपको जो ब्लॉक स्टडी मटेरियल दिया जाता है उसी में से क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और कई बार आपको रेफरेंस के लिए भी आपको ऑनलाइन असाइनमेंट हेल्प मिल जाता है बेटा. ठीक है वेंकटेश? So it will not be a big task for all of us to handle with the assignments. Okay, okay. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am.
Yes, good morning, Ashwini. Ma'am, I have already submitted the assignment and it's not handwritten. It's a typed one. So is there any problem? Yeah, Ashwin, you might have received the instructions regarding assignment submissions because generally it is handwritten assignment, Ashwin. Let me intervene. I'm Mamta Bhatia from RC Jaipur. Good As morning. told during the induction meeting, you people, those who have already submitted the assignments may please ignore, but from now onwards, please submit or upload only handwritten assignments on the LMS portal. Okay? Okay, ma'am, because we already, And I mean, general queries we had already taken during the induction meeting. Now, please be yourself to the content of the subject. Whatever units are being taken up, please refer to them only. And if you have any other queries, you can email to the regional center and we'll reply back to you. Okay? okay, because we have These already, the subject experts may not be able to give you the answers for all these general questions. Okay? okay, thank you. I hope students the screen is visible to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, now it's visible. So I'm just quickly scrolling out the units for you. अगर आपने नहीं देखा है तो I'm quickly like scrolling. अगर आपका कोई question है तो please do let me know. Broadly, I'm talking about all these aspects better. As I said, first we talked about management. This particular unit will define management, its utility and nature. It will try to make us understand what characteristics or what are the distinguishing between administration and management, and how management influences the organization, and what are the functions and challenges which organizations in current time are facing regarding managing things better. Speaking the definition in layman language में अगर बात करने की कोशिश करें, management is getting things done by others, and if you want to get the things done by others, it is again a challenging task in current time. Yes or no? Yes, ma'am. If you try to see this way, you have a structure plan जहाँ पे आपको summary भी मिलता है unit का, and you get a self assessment questions as well. तो अगर आप कहें तो मैं quickly scroll कर लूँ. If anybody has any question, I can just handle with your questions. Anybody have questions? No, ma'am. You can scroll down. Should I scroll down? Okay. क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे बेटा, it is very simple. You can read through. Your unit 2 talks. देखिए यहाँ पे आपके definitions आ जाएंगे. Even you can start reading with the summary as well. देखिए summary, हर topic का summary दिया हुआ है, as well as few activities are also discussed to make you practically clear how management works. ठीक है? I'm just scrolling quickly. अगर बीच में किसी का कोई query हो तो please put yourself on unmute and ask me the question. Hello. Yes. Ma'am, please discuss about the difference between the management and administration. Okay, sure. We are coming to the same part. Anybody would like to answer this question? See, generally, various organizations in the older duration used to use both the terms interchangeably. Okay, management and administration. Okay, but later on, what happened in the British school and American school? I hope आप लोग समझते हैं British school of thought and American school of thought. Yes, ma'am. Do we understand? Thought, schools of thought. Administration used to talk about policy formulation. Are everybody able to listen to me? Yes. Administration used to talk Yes, yes. about policy formulation, which is taking place at the top management. And management used to talk about execution of those policies which are being formed. जो policies administration के अंडर बनी, उन्हीं का execution managers used to execute and implement on day-to-day basis. जैसे अगर हम example लें, long-term planning और short-term planning. Long-term planning is about 5 to 10 years of time. Do we understand? So generally, Yes, top yes. management strategize for longer duration, and when it comes to the middle level management, they talk about execution and management and implementation of the plans. Yes, I hope I could answer the question. Difference between the two. Yes, ma'am. Basically, the long-term strategies have been executed by the management level, that is the middle level management. I hope the student who has asked with the question, is he clear?
Yes. Who had this question? So should we go ahead? Yeah, ma'am, we can go ahead. Okay, okay. Hello? Hello? Yes. Ma'am, Yes, Asim. I want to Asim. know Yes, Asim ji. that we knew that about administration is not only the policy formulation, Okay. but it is the policy implementation also. Okay. But you say here that administration is only policy formulation. It is not. No, no. Yes, Asim ji, I'm upgrading the things. It's not only policy formation, but at the top management, people take care about formulating the long-term plan. Okay. Yeah, somebody can just put yourself on mute. Somebody is disturbing the class. Yeah, thank you. Please take care about the background noise. It will disturb the class. When you talk about the aspect of administration, basically what happens, this used to be used as interchangeable terms, administration and management. But nowadays, more of the word management is being used in comparison to administration. जैसे अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रनिंग ऑफ एक्टिविटीज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. और जब अपन मैनेजमेंट की बात करें तो व्हेन यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट, टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ all your plans, all your staff, all your activities under the umbrella of the top management. ठीक है. सो बेसिकली कई बार लोगों को थिन लाइन डिफरेंस भी लगता है असीम जी कि इट इज अ बॉर्डर लाइन डिफरेंस. कई ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन ही बोलते हैं अभी भी, दे डोंट टॉक अबाउट मैनेजमेंट. बट इन अ मॉडर्न डे टाइम्स people are using word management more often over administration. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन में लोग कई बार बात करते हैं सुपरविजन की, जबकि मैनेजमेंट में लोग स्ट्रेटेजाइजिंग की भी बात करते हैं, where they further break down the long term objectives or long term goals into short term objectives. ठीक है असीम जी? Okay, I hope I clarified your doubt. Yes, ma'am. Should we proceed further? Okay, ma'am. Okay. Screen is visible to all? Yes, yes, ma'am. Yes. Yes, Okay. ma'am. This first unit talks all about what is management, what are the functions of management. Fine? Again, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था, it talks about, see, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, it talks about planning, organizing, coordinating, controlling, commanding. देखिए मैं इसको अपग्रेड कर देती हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए. यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो if you can see my cursor, it is POSDC, planning, organizing, staffing, directing and controlling. 5 major functions of management. ठीक है? Are you able to see 5 major functions Yes, of ma'am. management? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And organize, staff that without your workforce you'll not be able to carry forward your plans. Then direct your staff or direct your workforce, and definitely the control techniques. Control is what is the difference between the actual and the standards. What was being expected and what actually you have covered. Are we getting? Planning में मैंने Yes, आपको ma'am. बताया, planning talks about all the answers to what, why, where, how, when, by whom. हम इन सभी प्रश्नों का आंसर देते हैं. वो क्या, कब, कैसे, कहां, किसके द्वारा और क्यों. और उन्हीं के आंसर्स को हम फर्दर ऑर्गेनाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने अभी एग्जांपल लिया था, ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है. तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए वो प्लान करते हैं कि मार्केट में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. फिर प्रोडक्ट लॉन्च की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा. फिर उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, द वर्कफोर्स और द स्टाफ रिक्वायर्ड. एक बार वर्कफोर्स रिक्रूट हो गया, उनको काम दे दिया गया, तो उनको डायरेक्ट किए जाएंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आप कैसे काम को फर्दर ले जाएंगे. एंड डेफिनेटली वंस द वर्क इज बीन अलॉटेड, वंस द वर्क इज बीन गिवन, it has to be controlled by the manager or by the management that whether it is being done according to the expected standards or not. समझ पा रहे हैं आप लोग?
Are we all getting? Yes. चलें आगे इसके ऊपर, क्योंकि मैं वो बहुत थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ so that we can cover all of it. आपका कोई बीच में से कोई क्वेश्चन आए तो you can always put up with the question. बाकी आप लोग पढ़ेंगे सारा तो you will able to understand. Hello, ma'am, am I audible? Yeah. Yeah, ma'am, just from these definitions and the abbreviations that we have used, like this planning, organizing and controlling, there are like various combinations that we saw in this module actually. So from exams perspective, like do we need to remember these definitions and all in order to write answers? Swab, your question is very good. It will help all the fellow mates of your class. देखिए कई बार क्या होता है कि जब अपन रेगुलर स्टूडेंट्स को जब मैं ब्रीफ करती हूँ तो मैं उन्हें जरूर कहती हूँ कि आप चाहे वन लाइनर डेफिनेशन है जरूर याद करके जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर जो इवेल्युएट करते हैं उनको अच्छा लगता है कि आप वेल रेड आए हैं. ठीक है, रेस्ट with you all students, you all are very experienced. आप अपने लाइव एग्जांपल्स भी शेयर कर सकते हैं. जब डेफिनेशन की बात आती है, डेफिनेशन टॉक्स अबाउट 1 to 1 और वर्ड टू वर्ड. ठीक है, चाहे वो वन लाइनर डेफिनेशन क्यों ना हो. उसके अलावा यू कैन पुट ऑल थिंग्स इन योर ओन लैंग्वेज. अगर आपने किसी ने भी पेपर्स देखने की कोशिश की हो ऑनलाइन पे, हैव एनीबॉडी ट्राइड टू सी ओल्ड पेपर्स ऑफ इग्नू? वहां पे क्वेश्चन बहुत ही ओपन एंडेड तरीके से आते हैं. स्वैब, I hope I'm pronouncing your name correctly, Swab. Actually, my name is Swabiman, so just okay. because So it's Gmail, that much is visible on the screen, so I just thought that's why. Ma'am, it's absolutely. अगर आप लोगों ने पुराने पेपर्स देखे हो तो you might have got an idea कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, and they are essay type questions जनरली जहाँ पे 14 मार्क्स का वेटेज या सब आई डोंट नो 10 मार्क्स का वेटेज रहता है आपका क्वेश्चन का, वहां पे आप सब कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द लाइव एग्जांपल्स व्हिच यू आर एक्सपीरियंसिंग एट योर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल. ठीक है, these are the, like what should I say, these are the framework which help you to write your answer. ठीक है स्वाभिमान, आई होप आप सबको स्वाभिमान क्वेश्चन इज गुड फॉर ऑल एवरीबॉडीज हेल्प कि इन सब डेफिनेशंस को पढ़ना जरूरी है क्या. यस, टू नो देम इट इज वेरी एसेंशियल. अगर आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं, नेवर, मतलब नथिंग लाइक इट. लेकिन अगर याद नहीं रख सकते लेकिन आप समराइज तरीके से याद रख के अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट. अगर डेफिनेशन याद रख सकते हैं दैट इज नथिंग लाइक इट. अगर नहीं रख सकते हैं तो आप एक जनरलाइज समझते हुए उस आंसर को क्रिएट कर सकते हैं. स्वाभिमान, anybody have any other question in relevance to this? Swabiman, I hope I would able to Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Hanji. Ma'am, I want to ask that Yes, the ma'am. question. Yes, ma'am. The question paper available in the website is for is not for MBA new category, so it's for the ODL. So will we be getting same type of questions? The syllabus is same, Sohini. Okay, the syllabus is अगर same. आप इस सब्जेक्ट को MS01 करके सर्च करेंगे या सैंपल पेपर्स ऑफ MS01 करके सर्च करेंगे तो आपको सेम सिलेबस के क्वेश्चंस मिलेंगे. दे हैव जस्ट चेंज द कोड्स आई सपोज. उसके अंदर जो सिलेबस है ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक में से किस तरह का क्वेश्चन बनता है. Yes, ma'am. That is very much required also. It is reference for us कि इस टॉपिक में किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए हम ओल्ड 5 years पेपर्स देखते हैं. Okay, ma'am, the type will be the same. It will be descriptive type and will there be short questions? Descriptive type until unless any question paper pattern is being changed by IGNOU. Okay. Okay. Ma'am, will we be provided with any sample papers before the exam? It will be available online only. Students, yours is the first batch. Let me intervene. Sorry, Bhumija. Sorry. This will be your first batch, learners. So let's see what type of question papers. And whatever the question paper pattern will be, you will be informed in advance. If it is in the online mode, then also, and if the question papers are being, examination will be in offline mode, that also will be informing you and the pattern also. Okay? So just wait. Okay? Okay. Thank you, ma'am. The old papers are just for our reference, Sohini, so that we can get an idea ki what kind of questions formed out of a particular topic. क्योंकि हर बार there can be a different question from the same topic, dear. Okay. Yes, ma'am, but only the pattern will do. Pattern will be informed, as ma'am said. Pattern will be informed to you before your examinations. Okay, ma'am. Thank you. Any further questions, or should we go further?
Anybody has any further questions, any queries? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So this talks about unit 1, that is introduction to management. Yes, this is very important. Workforce diversity. अभी बहुत चल रहा है workforce diversity. Can anybody let me know what is workforce diversity? What is workforce? Ma'am, it refers to the group of individuals or people who are actually like employed in the industry. Yeah, it is group of people recruited by the organization. Yeah. ठीक है. जो staff organization में काम करता है वो workforce है. And what is diversity? The various backgrounds and various diversity like gender or social status. Exactly. Or We are working in a MNC culture. We are working at a globalization level. So what happened? People are working cross-cultural. Okay. And for managers in current time, it is a big challenge to manage this workforce diversity. So being managers, we need to be very much upgraded and well abreast to manage diverse workforce and get the things done from them. Okay, so this is very much upcoming topic in current scenario, which talks about workforce diversity, and it is the managers who need to deal with it. Okay, and again, innovation, things keeps on changing. Management is never static, it is dynamic. So it cannot be only a one kind of thing going again and again. Okay, so you need to be ready for changes taking place in your surrounding. Management के या फिर आपका environment जो business environment है, that is a changing environment. So you need to be ready for the changing environment and to deal with it. See, over here there is a summary also and some questions also. So you were asking now, there are a few questions also, see, mentioned over here. Yes, ma'am. Questions you can practice to get yourself acquainted with the topic. As well as a case study has also been discussed. Case study is an issue faced by the organization. ठीक है, आपकी एग्जामिनेशन में आती है केस स्टडी जहां पे आपको एक केस या एक इश्यू या कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन की दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि हाउ एज अ मैनेजर यू विल एबल टू रिजॉल्व दैट. ठीक है. Okay, ma'am. Is the screen visible? Unit 2? Yes. Yes. Is this No, screen ma'am, not yet. visible? Okay. Just give me a second. If anybody has any questions, do let me know. Madam, what is the probable date of examination? That will be informed to you shortly because I'm not the right person to tell you because I don't have this information, but will be informed shortly, Kiranji. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, please can you explain what is mathematical approach in this unit 2? Mathematical approach to? Like this contingency approach, theory X and Y. Okay, okay. We'll come to this. This particular unit talks about evolution of management. Okay. जैसे आप कोई भी साइंस या कुछ पढ़ते हैं तो you find that it has taken place, the era has continued from one era to another. जैसे अगर हम बात करें classical era, middle era या modern era. Okay, so there have been different school of thoughts which has evolved or came into existence from time and again.
ठीक है. तो जब आप बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट की, यू फाइंड 3 डिफरेंट अप्रोचेस. जैसे कि सबसे पहला अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच. उसके अंदर देयर आर फर्दर 3 अप्रोचेस व्हिच इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेसी. ठीक है. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में भी डिफरेंट ऑथर्स थे जिन्होंने अपने अपने डिफरेंट थॉट से, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से मैनेजमेंट को प्रूव किया. ठीक है. सो like if you talk about scientific management approach, the most popular was Frederick W. Taylor. Okay, he came up with the thought of management as to be a science. ठीक है. उसी तरह से जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के ऊपर जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हैड डिफरेंट ऑथर्स अगेन व्हिच केम अप विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स. बेटा जैसे अगर अपन बात करते हैं न्यूटन्स लॉ, साइंस में वेरी पॉपुलर है न्यूटन्स लॉ. वैसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट इज वेरी पॉपुलर इनटू मैनेजमेंट व्हिच टॉक्स अबाउट टेलर्स वर्क. ठीक है, FW Taylor's work, and then Henry Fayol also came into existence, which came with 14 laws of 14 principles of management as well. ठीक है. So let's come to the question which is talked about the contingency contribution of scientific management, and then administrative theory. Again, administrative theory talks about Henry Fayol's principle, and it has 14 functions or 14 principles of administration. They say division of work, authority, responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of people, centralization, scalar chain. इस तरह से 14 principles were being given by Henry Fayol under administrative theory, which talks about administration. ठीक है. The third one was again bureaucracy, which focused on the floor level workers. Floor level workers, I hope you understand, जो ground level पे, जो machine level पे या जो lower level पे work करते हैं organization में, they talk about this bureaucracy talks about the workers on the shop floor. Okay. They talk about job specialization, they talk about hierarchy, they talk about rules and regulations, they talk about career orientation. Okay. Again, the next approach was human relation approach or the behavioral approach, which talks about more of humanitarian grounds where leaders show their leadership skills, they communicate, they motivate. ठीक है. This was being proven by Hawthorne studies. बेटा एक experiment किया गया था जहाँ पे proof किया गया था कि if you have good leader, they can motivate team to perform at the best. So there becomes the role of manager very important. Our last था system approach, which is also called as the modern approach of management, which system talks about combination of various subsystems together. ठीक है, जो कि अभी currently work करता है बेटा organization में. Scientific management approach was been discarded by human relation approach, and human relation approach was been discarded by system approach, which says that all the systems are interconnected and they work in totality. जब आप decision theory approach पे बात करते हैं तो there are 2 types of decision making theories, quantitative and qualitative. This was the question. What Yes, is decision making? What is decision making? Can anybody tell me? Out of lot many alternatives, what you do, you try to select the best alternative. Yes or no? Decision making कैसे होता है? आपके पास बहुत सारे जब alternatives और options होते हैं, आप उसमें से कोई एक best alternative choose करने की कोशिश करते हैं on the basis of calculations, either quantitative or qualitative. Yes, ma'am. So these are different approaches to take decisions, quantitative approach and qualitative approach. जैसे brainstorming approach है, जैसे Delphi technique है, जैसे again simulation techniques है. So these are different approaches which helps you to take decisions or to select the best alternative after from the available approach. अगर किसी ने statistics पढ़ा है तो there are various statistical tests being used. और या फिर QT में अगर आपने पढ़ा हो लीनियर प्रोग्रामिंग, गेमिंग, सिमुलेशन टेक्निक्स, these are various tools which are being used mathematically to quantify the decision, the alternatives available and to take decisions. जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेटा एनालिटिक्स सुना है, अभी बहुत ज्यादा हाइप है डेटा एनालिटिक्स का. ह्यूज डेटा इज अवेलेबल, ठीक है, एंड दैट इज टू बी हैंडल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इनटू वॉल्यूम्स. तो डेटा एनालिटिक्स के लिए लोग
कई different tools use करते हैं for decision making in the organization. So that is a mathematical quantitative approach to make decisions by the help of logical processes, formulas, tools, techniques like simulation, programming, linear programming, gaming. ठीक है, that is mathematical approach. और contingency approach from the live experiences of managers. जैसे आप quantitative और qualitative को define करते हैं, students. Do you understand the difference between quantitative and qualitative? Yes, ma'am. Quantitative is always calculative. आप जिसको measure कर सकते हैं, ठीक है. और कई बार ग्राउंड रियलिटी से जब आप लाइव एक्सपीरियंसेस से जब आप सीखते हैं और उसके बेसिस पे आप जब अपने एग्जीक्यूशंस करते हैं या डिसीजन मेकिंग में आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज अ कंटिंजेंसी अप्रोच व्हिच बिलीव्स इन द मैनेजरियल प्रैक्टिसेस एंड स्टाइल्स. Quite possible I as a manager will have a different approach and you as a manager will have a different approach. लेकिन आप और मैं अगर linear programming के थ्रू जाएंगे तो we'll have a same approach because calculation method would be same. Do you agree? Yes, ma'am. It was question of who did ask this question to me? Can I know the name better? Yes, Twinkle. हाँ, Twinkle. Are you getting what is the difference between the Yes, two? ma'am. एक मैं अपने लाइव एक्सपीरियंस से एक डिसीजन ले रहा हूँ, एक मैं डिसीजन ले रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द क्वांटिफाइबल टेक्निक्स, जिसमें मैं टूल्स एंड टेक्निक्स लगा रहा हूँ. तो हो सकता है माय लाइव एक्सपीरियंस और माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, ट्विंकल. ठीक है, हो सकता है ग्राउंड रियलिटी से मैंने चेक करते हुए उसको डिसीजन लिया हो, अपने एक्सपीरियंस को उसके अंदर एग्जीक्यूट करते हुए प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, रियलिस्टिक एस्पेक्ट पे. कई बार होता है ना कि यू फाइंड थिंग्स, सपोज समबडी हैज कम टू यू सीकिंग लीव परमिशन, तो आप कहते हैं कि नहीं, तुझे देख के मुझे लग नहीं रहा है कि ना यू आर इल, सो यू गो कीप ऑन वर्किंग. और वहीं आपका लाइव एक्सपीरियंस अगर कहता है कि नो, ही इज लुकिंग टू बी स्ट्रेस्ड, सो ही शुड बी गिवन रिलीफ. आप समझ पा रहे हैं ट्विंकल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. One is very much calculative, मतलब step by step, or one goes on situation, on practical approach. That is contingency. ठीक है? It may differ from time and person, scope, scale, मतलब values, सबका अलग होता है. आपका perception, मेरा perception will be different. Yes or no? Yes, ma'am. Theory X and theory Y. This was also one of your question, Twinkle. Yes, ma'am. Theory X and Y. Generally, जब ये this theory was been given by Douglas McGregor, बेटा. He was a famous psychologist, बेटा. ठीक है? Okay. He wanted to present the human side in the organization. Organization में human side को present करना चाहते थे. ठीक है? तो they wanted to classify people into two categories. ठीक है, उन्होंने लोगों को दो कैटेगरी में अजम्पशन की बेसिस में डिवाइड करने की कोशिश की. उन्होंने कुछ लोग, देखिए बेटा, एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. फ्यू पीपल वर्क विद अ स्टिक एंड फ्यू पीपल वर्क विद अ कैरेट. Yes. कई लोग सिर्फ बातों से काम कर लेते हैं, कई लोगों को आपको थोड़ा पुश करना पड़ता है. So McGregor wanted to divide people on their day-to-day functioning into two categories, category X and category Y for managers. कि भाई मैनेजर को अगर लोगों को मैनेज करना है तो उसे समझना पड़ेगा कि लोग किस तरह का बिहेवियर रखते हैं. सो ही कैटेगराइज पीपल इनटू टू कैटेगरीज, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. थ्योरी एक्स के अंदर उन्होंने अजम्पशन लिया कि जनरली ऑन एन एवरेज हर बंदा काम को डिसलाइक करता है और उसे अवॉइड करना चाहता है. तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको पुश करना पड़ेगा यूजिंग कैरेट एंड स्टिक अप्रोच. ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड होता है और उसको पुश करके काम करवाना पड़ेगा. He will not work willingly. आगे आके काम नहीं करेगा. ठीक है, उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा. ठीक है, उसको सिक्योरिटी दिखाना पड़ेगा कि भाई if you work you will earn, you will get the rewards. नहीं तो he will not work क्योंकि he will resist change, he will not like to work. So he categorized people into two categories, theory X, category X and category Y. कैटेगरी एक्स में उन लोगों को उन्होंने अज्यूम किया जिनके ऊपर स्टिक अप्रोच, अथॉरिटेटिव अप्रोच, इंस्ट्रक्शन, फोर्स देम टू वर्क, उन्हें उनका बेटरमेंट दिखाओ और फिर उनसे काम करवाओ. क्योंकि ये लोग खुद से काम करना नहीं चाहेंगे, ये चेंज करना नहीं चाहेंगे और दे विल लाइक टू बी मोर पुश काइंड ऑफ पीपल, जिनको सेल्फ ड्रिवन नहीं होंगे वो.
ठीक है, तो उनके ऊपर मैनेजर्स को अथॉरिटी यूज करनी पड़ेगी और उनको टास्क बताना पड़ेगा, उनसे काम करवाना पड़ेगा। कैटेगरी वाई में उन्होंने रखा उन लोगों को, दोस्त हु लव देयर वर्क एट देयर ओन, they like to work at their own, they pray their work, उन्हें अपना काम से प्यार है, they want to take additional responsibility, वो आगे आके काम करना पसंद करते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डायरेक्टेड है, कमिटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है। एक्सक्यूज मी, आप सब समझ पा रहे हैं? ट्विंकल का क्वेश्चन है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. all of you. Question has been put across by Twinkle, but I'm trying to refer to all of you. Theory X and Theory Y, that is they classified the people into two categories. आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, फ्लोर लेवल वर्कर्स के साथ काम करते हैं, तो आपको दोनों कैटेगरी के लोग मिलते हैं। तो हाउ मैनेजर्स शुड स्ट्रेटेजाइज टू मेक देम वर्क। उन्होंने एक्स कैटेगरी में उन लोगों को रखा जो लोग काम को रेजिस्ट करते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, ऑन एन एवरेज दे डोंट प्रेफर टू वर्क, तो उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उनसे काम करवाना पड़ेगा, उन्हें जॉब सिक्योरिटी दिखा के बताना पड़ेगा कि आपको काम करना है, क्योंकि वो खुद से आगे चल के काम नहीं करते। और थ्योरी वाई, people who love work, they will look for additional responsibilities, self-controlled, well committed, and functions for association with the organization. Sorry for interrupting, ma'am. Your what? My voice is coming back to me because somebody's mute is on. Oh. कौन है, इसलिए मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है। Can anybody switch off their mic? ट्विंकल आपका ऑन है? No, ma'am. हीरक शर्मा का I'm able to listen my own. Yes, ma'am. Your voice is audible to me. Okay. Any further question? Should we go further? Hiresh Sharma, can you please go on mute? Okay. Ma'am, can you now try speaking? Yeah. I hope theory X and theory Y is clear. Contingency approach and quantitative approach is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप अगर देखें यूनिट 2 में आपके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं बेटा, और अगर आप पुराने क्वेश्चंस देखें तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई विद एग्जांपल्स, ठीक है। डिस्कस द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, ठीक है। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, जो क्वेश्चंस इस यूनिट में से बनते हैं बेटा। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू द मैनेजमेंट थॉट, ठीक है। दीज आर डिफरेंट स्कूल थॉट्स बेटा, स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। राइट नोट्स ऑन हॉथन स्टडीज और हॉथन एक्सपेरिमेंट्स, कंटिजेंसी थ्योरी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस आएंगे। मैम, हाँ जी। I want to ask you. हाँ। That, yes, Asim ji. That everybody, every man, every people want to develop only for himself, for his ambition, his career fulfillment, his success, his family well establishment. Nobody, I think, very rare persons thinks about these, about the others management, others development. So what is the highlighted, what is the angles, what is the directions on the basis of two theories, theory X and theory Y? Okay. अजीम जी wants to know कि everybody is self-centered. ऐसा ही कह रहे हैं अजीम जी? Yes. And they just want to work for themselves, not for the organization. Yes. Okay. This question lovely fits into your unit 3, which talks about role of manager. ठीक है. As a manager, I should understand that how people can be put it into the direction where they think for a bigger goal. हेनरी फ्योल कहता है कि आप जब तक अपने टीम मेंबर्स को लार्जर गोल्स के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, उनके स्मॉलर गोल्स अटेन नहीं होंगे।
if I'm joining an organization for fulfillment of my individual goals, I have to work firstly for the fulfillment of the organization goal. Henry Fewell में एक principle है असीम जी which talks about togetherness of organization goal with individual goal. Yes, कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा तो डेफिनेटली आपका इंडिविजुअल गोल अचीव होगा. आई एम वर्किंग विथ रिलायंस फॉर एग्जांपल, ठीक है. If Reliance is doing good in the share market, or if it is doing good at the growth rate, wouldn't I as an employee get benefit of? क्या मुझे as an employee उसका benefit मिलेगा? Yes. Yes or no? Yes. और अगर मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हूँ जहां पे थोड़े ही दिनों में लॉक लगने वाला हो या वो शट डाउन होने वाला हो, तो वहां पे मेरा क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा? मेरा करियर ग्रोथ हो पाएगा वहां पे? Asim ji, I want an answer from you. Will it happen? For the development of organizations, I also persons also be developed with the development of the organization. Yes, exactly. Individual development. हाँ, देखिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा तो इंडिविजुअल भी पैरेलली डेवलप करेगा. ये ही रोल मैनेजर का है अपनी टीम मेंबर्स को समझाने के लिए. But my question is different. Okay, what's your question? My question was theory X and theory Y highlighted. इसी को मैं आगे असीम जी आइडेंटिफाई करूंगी. Okay, ma'am. Okay. है ना, लेट मी एक्सटेंड फर्दर. थ्योरी एक्स में हमने कहा दोज पीपल वांट अ पुश टू वर्क, ठीक है. एंड थ्योरी वाई पीपल आर विलिंग टू वर्क, ठीक है. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वेंकटेश यू आर रेजिंग हैंड, आई विल गेट बैक टू यू. जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आपको इस तरह के दोनों तरह के कैटेगरी के लोग मिलेंगे. फ्यू हु आर सेल्फ ड्रिवन और फ्यू whom you need to push. जनरली जो फ्लोर लेवल पे लोग वर्क करते हैं, जो फोर्थ लेवल या जो जिसे मैं वर्कर्स कहती हूँ, जनरली कोमल, ओके थैंक यू. जनरली जो फ्लोर लेवल पे वर्कर्स वर्क करते हैं उन्हें आपको पुश करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने लाइफ गोल्स नहीं पता होते हैं. सीम जी, आई होप यू एग्री विथ मी. उन्हें आपको समझाना पड़ता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, उनको आपको पुश करना पड़ता है. आज अगर मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वर्कर सुबह से शाम की डेली वेजेस पे काम कर रहा है, तो उसका जो सुपरवाइजर है वो उसे समझाता है कि इफ यू डू दिस मच एंड मोर यू विल बी बेनिफिटेड. तो वैसे कैटेगरी के लोग आपको मिलते हैं. यही एक्स पीपल कह रहे हैं कि उनको आपको बताना पड़ता है उनके लिए क्या अच्छा है, उनको क्या चीज सिक्योरिटी देगी, तब वो काम करते हैं. आगे से बढ़ के नहीं करते. वही मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अगर आप देखें, पीपल आर सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है. तो ये रोल मैनेजर या सुपरवाइजर का है उन्हें समझाना और उनसे काम करवाना, ठीक है. तो थ्योरी एक्स वाले थ्योरी एक्स में रहेंगे और जनरली वो रहेंगे जिन्हें बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि उनके लिए क्या बेटर है, ठीक है. असीम जी, I hope I am able to understand your question and justify your question. Okay, ma'am. Venkatesh, you raised your hand. Yes, ma'am. For the term examination point of view, shall we have to remember this experiments conducted by F.W. Taylor and principles by Elton Mayo and Few of Henry them are Fewell? very very important, Venkatesh. So एक बार आप read करेंगे तो वैसे आप लोगों को याद हो जाएंगे. Few of them are important क्योंकि सीधा शॉर्ट नोट आता है उस पे. जैसे हमने लिखा ना अभी मैंने टोल्ड यू, हॉथन स्टडीज पे सीधा एक्सपेरिमेंट है. हेनरी फ्यूल के सीधे आपके 14 प्रिंसिपल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस 14 प्रिंसिपल्स. इट्स दीस आर वेरी कॉमन एंड एवर टाइम एवरग्रीन क्वेश्चंस आस्क्ड अगेन एंड अगेन. ओके, ठीक है. जो चीज कॉन्सेप्चुअल है जो अपन को थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी. वैसे दे आर वेरी सिंपल. आप लोग एक बार गो थ्रू करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, ओके. So unit 3 में focus नहीं करी roles of manager. I hope you all understand how a manager can lead his team. He needs to be idealistic. He needs to be very what should I say, setting example kind of a person and should lead the team from front. और कई बार कई लोगों का क्वेश्चन होता है what is the difference between a leader and a manager. जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में हम डिफरेंस के ऊपर बात कर रहे थे, वैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है what is the difference between a leader and a manager. कहीं सुना है आपने ये? जैसे kings used to be leaders, beta, students. Sorry, I'm using the term beta because I'm often in term of using this. So I hope you don't take it otherwise. Students, I hope you might have heard about kings who were you used to lead their kingdoms. ठीक है. Again, managers have a multifaceted personality.
They have multiple folds and multiple roles to play. An extension to a leader. A manager can be a good leader. ठीक है? Manager has a multifold or multitasking work to manage things. Okay, तो पहले के इरा में लोग लीडर्स बोलते थे और अब के इरा में लोग मैनेजर्स बोलते हैं जो कि लीडरशिप स्किल्स शोकेस करते हैं. Okay? Okay. Anybody has any other question? Unit 4 talks about planning, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था. Planning talks about answering questions like what, why, when, how, by whom, to be done. ठीक है. अगर आप प्लानिंग के फंक्शन you try to talk about importance of planning या features of planning, they talk about objectives. Their main function is to control, to achieve the objectives of the organization via organizing, directing, staffing, and controlling. ठीक है. Planning involves decision making also, where you try to take out the best decision for out of the various available alternatives. ठीक है. कई बार एक डिफरेंस भी आता है. Two terms are sometimes being sound similar, planning and forecasting. Can anybody tell me difference between the two? कई लोगों को सिमिलर लगता है planning and forecasting, though they are common, but थोड़ा सा डिफरेंस है. Madam, planning and execution? Planning is execution, and what is forecasting? I don't know. Okay, anybody? Forecasting is what is going to happen. Expectation. To predict. To predict what is going to happen. On the basis of previous data. Okay. Or planning is what one wants to happen. Getting my point? मैं क्या करना चाहता हूँ, that is planning. And forecasting is what is going to happen. Generally, forecasting leads to planning. Okay. Are you able to get? Yes, Are you able to get planning versus Yes, ma'am. forecasting? Okay, forecasting is what is going to happen, and planning is what one wants to happen. So forecasting leads to planning. For example, अगर मुझे natural resources को conserve करना है, ठीक है? So what I'll do, what I have to do, that is planning. ठीक है? Forecasting, I want to conserve natural resources. Now how they will be conserved, that is my planning. ठीक है? चले आगे? Yes. There are different types of plans, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, long term and short term. ठीक है. लॉन्ग टर्म जनरली स्ट्रैटेजीज कहलाता है और शॉर्ट टर्म जनरली टैक्टिक्स कहलाता है. टैक्टिक्स आपने सुना है, गेम प्लान में टैक्टिक्स होता है. स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए आप ट्रिक्स एंड टिप्स लगाते हैं. लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज मोर देन 10 years प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज अप टू 5 years और डे टू डे प्लान भी होते हैं जिन्हें आप टैक्टिक्स कहते हैं. Any questions in planning? What are the benefits? Can anybody tell me benefits of planning? What is the importance of planning? You get better results, ma'am. Better by results. being You go, exactly. You go plan. You save resources. You achieve better results. You go in. You don't have a delay factor. You can complete things into time. ठीक है. तो दो तरह का प्लानिंग मैंने पहले ही बताया आपको, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड टैक्टिक प्लानिंग. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. Lovely song. Can we have mute, please? Two types of planning, as I said: strategic planning for 5 or more than 5 years, and tactical planning for 1 to 5 years. Yes. Operational plans are also there. Operational plans, that is executional plans. जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स को अचीव करने के लिए आप डे टू डे बेसिस पे प्लान करते हैं. फॉर एग्जांपल इन अ बैंक, ठीक है, they work on day to day basis also and they work for coming 5 or 10 years of day also. तो जो फंक्शनल एक्टिविटीज को अचीव करने के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, जो प्लान आप करते हैं डे टू डे बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे, उनको आप ऑपरेशनल प्लान्स कहते हैं बेटा. Getting the things done. आप एक लंबा समय का प्लान लेके बैठे हैं कि आफ्टर 10 years माय ऑर्गेनाइजेशन शुड बी लिस्टेड ओवर हियर, तो उसको करने के लिए जो आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा वो ऑपरेशनल प्लान्स है. डे टू डे एक्टिविटीज, ऑपरेशंस मींस डे टू डे एक्टिविटीज. ठीक है. उसको बड़े प्लान को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज प्लान करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल है,
बर्थडे पार्टी करना है, बर्थडे पार्टी को एग्जीक्यूट करने के लिए आप जो जो करेंगे दैट इज योर ऑपरेशनल प्लान. ठीक है? Okay. Did we go on the fifth block? Organizing. This is your fifth unit. What do you mean by term organizing? To give responsibility. To give responsibility. To organize. To organize. The planning. To facilitate. Things To to do grow. okay. Things to do in a systematic manner. Okay. Okay. To form groups who will do tasks. ऐसा भी हो सकता है. To identify rules and regulations. To identify structure and hierarchy. ऐसा कह सकते हैं. Who will lead, who will follow, ऐसा कह सकते हैं. Yes, yes. To structure the things, to rather make it more framed, to make it more structured. ठीक है? अभी चीजें पेपर पे हैं, फिर आप एग्जीक्यूशन में डालेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर चाहिएगा. दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है? Okay. इसमें आपका अथॉरिटी, डेलीगेशन, डिसीजन मेकिंग सब डिसाइड होगा. हु विल डू व्हाट, ये सब डिसाइड होगा. एक फ्रेमवर्क बनेगा. ठीक है? Organizing involves people and jobs in the organization. ठीक है? Now you plan that who is going to do what. Fine. आप roles and duties define करते हैं, आप activities define करते हैं, आप describe करते हैं various jobs. आपको किन लोगों को select करना पड़ेगा, train करना पड़ेगा, वो define करते हैं. ठीक है? Basically, how you arrange things so that people can work in the right direction. समझ पा रहे हैं? Are you able to understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, okay. जिसे हम कहते हैं कि डिविजन ऑफ वर्क करते हैं आप, डिविजन ऑफ लेबर. दिस विल डू दिस, दिस विल डू दिस. फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स बनती है जिसे आप हायरार्की कहते हैं, जिससे कि डेलीगेशन ऑफ वर्क इजी हो जाता है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इजी हो जाती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इजी हो जाती है. At different levels, who is going to do what, trying to create the relationship between people at different levels. जिसे हम कहते हैं top level, middle level, lower level. Organizing के different approaches है बेटा. Industrial Revolution period. इस पे generally question नहीं आता. Scientific management approach जो आपने School of Thought पहले ही पढ़ा था. Scientific management पे question आता है बेटा. Scientific School of Management पे. Okay, तो ma'am. एक बार go through करेंगे ना तो it will be very much clear to you. Hello, madam. Hello. Yes. Yes. Madam, my assignment last date is on 15th May, right? I couldn't get your question. Can you come back, please? Assignment submission last date 15th It might of be May. mentioned on your instructions, na? Because I'm not having in front of me your assignment. Your classmates can help you out with this question. Is the last date of submission 15th May? Yeah, As of Parnavi, now, yes. it is 15th May. Yes, ma'am. 15 May. You got the answer? It's 15th Okay, May. okay. You need to submit Okay. your handwritten Okay. assignments by 15th May. Okay, okay, okay. एक Thank बार you, ma'am. इट्स माय रिक्वेस्ट, एक बार आप फटाफट से किसी के सामने अगर असाइनमेंट है तो गो थ्रू कर लीजिए. किसी को कोई क्वेरी हो तो इट विल बी अ हेल्प टू ऑल ऑफ यू. अगर जिन्होंने कर लिया इट्स गुड. मैम एक क्वेश्चन था हाँ कि जी. जो है अपने असाइनमेंट जो है तो उसकी लास्ट डेट 15 रहेंगी ना, आगे नहीं बढ़ेंगे ना शायद अभी तो यही है, अगर बढ़ेगी तो आपको इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे. और मैडम एक था कि वहाँ पे जब आप ऑनलाइन जाते हैं ना तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आप उसको डन करिए, मतलब आपने पढ़ा है तो वो सभी को अभी डन कर देना है या जैसे आगे जाते हैं असाइनमेंट के पहले डन करना है? वो जो एलएमएस है ना, एलएमएस पे. हाँ, एलएमएस पे इफ एनीबडी हैज अपलोडेड काइंडली हेल्प किरण टू गेट द थिंग्स डन. किसी ने अपलोड किया है तो बता पाएंगे इनकी क्वेरी का आंसर? अपलोड तो हो जाएगा, अपलोड मैं कर लूंगा मैडम. हाँ. पर जो स्टडी मटेरियल है ना
तो वहां पर आता है कि आपने रीडिंग किया है तो उसको यस करिए, मतलब वो डन करिए करके ठीक सभी। है, अगर आपने कर लिया है और नहीं भी किया है तो भी इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू डू इट डन। हाँ ओके, तो सब डन करके रख देना चाहिए कि आपने पढ़ा या जनरली बात आपसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं देन ओनली यू सॉल्व द असाइनमेंट और यू अटेम्प्ट द असाइनमेंट। That's the reason that university puts a question across. यस, या फिर आपने अगर देखा ही नहीं वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे स्टडी मटेरियल आपने देखा और डन किया, मतलब आपने देखा है। स्टडी मटेरियल गो थ्रू करना बहुत एसेंशियल है आपके नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए भी, असाइनमेंट्स के लिए भी और एग्जामिनेशन के लिए। एक गो थ्रू हो जाता है असाइनमेंट के लिए जब आप पढ़ते हैं तो एटलीस्ट वन रीड हो जाता है एग्जाम से पहले आपका। ओके, और एग्जाम मैडम पूरी डिस्क्रिप्टिव रहेंगी, ऑनलाइन भी रह सकती है और ऑफलाइन भी रह सकती है। ओके हाँ, अभी मैम ने अपन को ब्रीफ किया ना, इट कुड बी एनी ऑफ द मोड व्हिच विल बी इंस्ट्रक्टेड टू यू बिफोर टाइम। यस मैडम, चलेगा, थैंक यू। पर आप लोग तो डिटेल में पढ़िए सो दैट यू आर ऑल रेडी फॉर द एग्जाम्स। यस मैडम। और किसी का कोई क्वेरी है तो प्लीज डू लेट मी नो बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट विद द टाइम नाउ। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरी। Madam, I didn't receive study materials until now. And what should I do? You just mail it to the regional center or whichever is your center from where you get the instructions. Ma'am, we won't receive the study material. We have to learn from soft copy. Okay, so you got an answer from your classmate. Okay, we won't receive any materials, right? No. Okay. Okay. And ma'am, if we have any doubts further, can we communicate with you in any sort, like with through email or? You can just put a request. We can again held on जब आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, हर्ष I'll get back to you. आपने हाथ रेज कर रखा है, I'll get back to you, Harsh. You can anytime get the things done via channel. Okay. Okay. Harsh. Okay, from where we get the soft copy study material? Or you put it on the website. IGNOU ka. You'll get the study material there. Ma'am, me also, I haven't got the study material. Harsh, you can also take it online, Harsh. It's there on LMS. LMS पे भी available है, फैजल जी कह रहे हैं. Okay, ma'am. Ma'am, one more thing. Ma'am, where will I do the assignment? I haven't got any idea, ma'am. Can anybody help Harsh? How to upload the assignment and how to do? Again on LMS. Assignment. It is again on LMS, Harsh. You need to log in there. Ma'am, is there any user ID or password? With the help of your user ID and password which has been issued to you by university. Okay, ma'am. Pulkit, you had some question? No, ma'am. Pulkit को था कोई question? Pulkit, you were speaking something? No, ma'am. Okay. I'm not able to identify your name. JGNTHMS. आप भी कुछ बोल रहे थे बीच में? Madam, when will be our exam conducted on? Again, I don't have the right answer for this question. You need to be in communication with the university. आपकी websites पे information update होती रहती है. Email में आएगा? हाँ? Email में भी? हाँ, आ जाएगा, information आ जाएगा, but you keep checking the website of the university. It has been updated every time there. IGNOU.ac.in, right? हाँ, exactly. अभी तो आज semester शुरू हुआ है ना, तो it will take some time. So you have time for preparation. Yes, Venkatesh, you have a question. Madam, what is the difference between time and motor study, ma'am? Time and motor study? Yeah, okay. Kunal has some question in the chat. Can anybody help him with the downloading of ID card? How it can be done? Venkatesh, if you will study in Unit 1 or Unit 2 evolution, you will find the answer there. अभी मैंने screen sharing stop कर दिए तो otherwise I would have gone there back. ठीक है? It is in Unit 5, ma'am, organizing. हाँ, it is there. Somebody had a question about iCard downloading. Pulkit is saying it has been downloaded from LMS. Yes, Harsh, you have a question. Ma'am, can we got these lecture in form of recorded? That I need to check with Harsh. That I need to check in. I don't know. Okay. Any further questions? Sohini had a question that if she wants to
when will be uploaded by e-tutorial and as per quadrant approach? I don't have an answer for this message which has been there in the chat. See, iCard के लिए दे दिया है आपके friend ने login ID. The URL has been there from where you can download the ID of yours. Chat में please देखिए. And somebody can help Mrityunjay, please. E-tutorials on LMS portal. It will be, Mrityunjay, I hope it will be uploaded shortly. मैडम आई कार्ड कहाँ से मिलेंगे मैडम आई कार्ड? ये अभी आप चैट बॉक्स में देखिए, फैजल जी ने लिंक डाला है आई कार्ड के लिए. Kindly go to that link and download from there. मैडम हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे वहाँ पे डाल सकते हैं क्या? लिंक डायरेक्ट ओपन होंगी क्योंकि यहाँ से ओपन नहीं. Can anybody help किरण जी please? अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप में somebody can just put in. जैसे भी आप चैट. हाँ, फैजल will do it. Thank you फैजल जी. So should we take a leave if other further questions are not there? एक बार आप पढ़िए अपने unit blocks को, and in case if the another class is scheduled, we will take queries again. मैम आप लोग स्टडी मटेरियल पढ़ के आएंगे. हाँ जी असीम जी. हाँ मैम 5.7 organizing chapter unit. Okay. Workplace and architectural ergonomics. 5.7. 5.7 organizing. Okay. Study material. हाँ. Workspace and architectural ergonomics. Ergonomics, you are talking about ergonomics? Yes, it's basically science of human engineering. Okay. An approach which engineers set. Okay, ma'am. And the difference has also been given between man versus machines. Or time or motion study के लिए भी somebody was putting a question. I suppose Harsh was putting a question. Time motion study के ऊपर. Yes, ma'am. See, these are two types of study where time study talks about work measurement, art of recording and analyzing mathematically or methodologically, and work studies, motion studies talking about. इसका भी बहुत अच्छा डिफरेंस दे रखा है आपको. Time study is talking about the determination of time taken by workers to perform a particular job, and motion study is concerned about movements and motions of workers. Time and motion, I hope you're able to understand. Time taken, motion, the movements. Okay, ठीक है. Time covers both worker and machine, but motion covers only the workers. Time studies being used with the help of a stopwatch, but the motions are being covered by a photographic process. Are you able to get, Harsh, the difference between? Time measures the worker's time of performing a job, whereas motion is concerned only with the movements. ठीक है. Stopwatch से आप मशीन का टाइम नोट कर सकते हो ना. मशीन ने कितनी देर में काम किया, वर्कर ने कितना देर काम किया. पर motion is motion of only the workers or the humans. Asim ji, your question is being justified. Difference? Yeah, ma'am. Yes. Okay. Should we make a leave? Anybody has further questions? About the class, Sohini was putting a question about the class. If further class they are being required, that we will get back via mail. Sohini का question था, I suppose. Hello. Asim ji, you have a question. Yeah, what will be the supportive reference books for the MMPC01? It is, one is Kuntz, Management Practices by Kuntz, and one is L.M. Prasad, Indian author. These two books can be referred additionally. Please, ma'am, repeat. One is Kuntz, Management Practices by Kuntz,
K-O-O-N-T-Z. Kuntz is the author. And one more book is Management Functions by L.M. Prasad. L.M. Prasad. L.M. Prasad. Management School. What is the name of author? Management by Practices, Kuntz. Management by Practices Schools. मैम COOMS है क्या? कुम्स COO K-O-O-N-T-Z. ये सबसे अच्छा बुक है. अगर आप कुम्स भी पढ़ लेंगे तो it has everything into it. Okay, ma'am. मैडम कौन से पेपर के लिए रहता है कुम्स? मतलब कौन से? मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस के लिए. मतलब पेपर फर्स्ट. हाँ जी, जो अभी अपन कोड ले रहे हैं उसी के लिए. हाँ ना, पेपर फर्स्ट ना मैम कंप्लीट. हाँ जी. ओके, दोनों किताब पेपर फर्स्ट की है. हाँ जी. ओके मैम. अगर आप कुम्स भी ले लेते हैं एक बुक भी, इट इज कवरिंग एवरीथिंग. ओके. एंड दिस इज द बेस्ट बुक क्रॉस द ग्लोब. ओके. Ma'am, can you repeat the name, please, ma'am? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट बाय प्रैक्टिसेस बाय कुम्स. इनके बहुत सारे टाइटल्स हैं. यू कैन टेक एनी ऑफ द टाइटल बाय कुम्स जो आपके सब्जेक्ट का है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी है इनका टाइटल. मैनेजमेंट बाय प्रैक्टिसेस भी है. स्पेलिंग इज KOONTZ. Author's name is KOONTZ. Kuntz. He's the most popular author for management by practices. या आपके management functions जो है ना, principles of management जो आपका ये पेपर है. He's the most popular author for this book. इनके आपको different titles में भी मिल जाएंगे. Essentials of Management by Kuntz, Management by Practices by Kuntz, Principles of Management by Kuntz. ठीक है. Okay, ma'am. But the author is Kuntz. So should we take a leave? हाँ जी. Ma'am, we have to purchase the study material from the market, or we will get from the It is available online. IGNOU की वेबसाइट पे जाओ, वहां से डाउनलोड कर सकते हो हर्ष. Okay, ma'am. है ना, स्टडी मटेरियल आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो. कुछ परचेज नहीं करना है आपको. Okay, ma'am. I don't have an answer that there. Do you have a separate WhatsApp group for RC? If some of your classmates can help you. In the chat, there is a question. Can somebody help him, please? Faisal ji has shared the WhatsApp link as well in the chat. Faisal ji, thank you for helping me out. So should we take a leave, students? Yeah, sure. Yes, Venkatesh. One last question, ma'am. Sure. For the next class, we have to study this block 3 and block 4, and we have to come and right, ma'am? Yes, Venkatesh. Very rightly assessed. Because if you come red, it becomes easy for me to go directly on that particular topic and explain. Okay. Even for your further classes, all of you, आपके further classes भी scheduled है ना अभी in days में. Kindly try to shuffle all your study material एक बार के लिए, so that you have some necessary questions for your faculty facilitator. Okay, for your counselor, you have questions. आप जैसे अगर next paper पढ़ेंगे, second paper, तो kindly go through these blocks beforehand, so that you have queries. क्योंकि अब देखिए ये पूरा semester का course set is very difficult to wind up in a class of 70 minutes or 60 minutes. I hope you all understand. Technically, it is not possible. ठीक है. So please, it's good question being raised by submitted by Venkatesh, that kindly read your blocks, go through, or read your assignment. कहीं पे भी कोई query है, क्योंकि counseling classes है, तो go pinpoint it to your queries. हाँ जी Venkatesh, you wanted to add something more? Yes, ma'am. This assignment questions and this for term and examination also. Shall we get the important question for what to study and exam point of view like that? Important questions you will not get. You can just get a reference from the older papers. Important questions you will not get, Venkatesh.
आप ओल्डर पेपर से रेफरेंस लेके देख सके हैं कि किस तरह का क्वेश्चन किस टॉपिक पे बनता है. Okay. You'll not get any important questions from anywhere, Vita. Please, all of you, all the students, it will be all old papers can be a reference check for you that these kind of questions are being framed from particular concepts. Should we take a leave? Thank you so much, madam. It was really nice. You've been very patient with all our questions, and really appreciate everything. Thanks a lot, Shikanji. Thank you. My pleasure. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You've been really nice. Thank you, all of you. Again, I had a nice class with all of you. I enjoyed the morning session. Thank you, Samriddhi. Thank you, Asimji. Thank you, Ashmi. I hope I could cater with your queries. I hope. Yeah, you've been Yes, sir. really. Thank you. Thank you. Thank you, Fazilji, for solving maximum queries regarding WhatsApp. Faisalji has been doing it in our Telegram. He's been doing it. He's quite a nice guy, you know. He's been like a Wikipedia for us. Okay, so we should have applause for Fazilji, na? Yeah. We need to. Yeah. Thanks, guys. Thank you, Faisal. So see, we help each other that ways. Yeah. I mean, it's something new for all of us, ma'am. Yeah. And as a counselor, for me also, it's a help like Fazilji would have rendered to me. Thank you, ma'am. Thank you, all of you. Okay. Thank you.
Hello? 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 Hello?